Hello, hello students. Today we talked about queue data structure. Actually, previously we have cleared the concept of queue, then again revise the basic linear queue here. Okay. Now, so what is a linear queue is? Linear queue is a linear data structure. Okay, so no doubt there are 2 points, rear and front. Okay, so data element, or we are added the data at one end, that is rear, and remove the from another end, that is front. Okay, so there are two basic operations associated with queue: insert operation and delete operation is. Okay, so what exactly the insert operation will do, that we need to focus on. Okay, fine. So what exactly the insert operation is? Okay, now this is our insert operation is. Okay, so for inserting the element into queue. Okay, so what exactly we are inserting the element into queue, that we need to focus on. Okay, fine. So here insert element, we are inserting the element from rear and deleting from front. Okay, means actually that is the queue line. Okay, so you can easily understand that this is a queue. For example, we are representing a linear queue using two types: horizontally and vertically. Okay, so when we are talking about the horizontally, so it looks like the similar our array is. Okay, so just concentrate. We are adding the element from rear, that is suppose first element we have inserted triple A, triple B, triple C, triple D, triple E. Okay, so now our rear points to the fifth location, and if I want to delete the element from front, so it should be started point. Okay, so again you can easily understand that is in vertical queue, in which the last element means we are inserting the element in using rear pointer. Okay, okay, so now the rear pointings to triple E and front pointings to triple A. Here means we are removing the element from front side and inserting from rear side. Okay, this is the basic concept of what queue is. Okay, that is linear queue. That's why this concept is called as FIFO, means first in, first out, or first serve. We can say means FCFS also you can talk here. First in, first out, and again we can call it as a first come, first serve. FCFS. Okay, this is a technique of what linear queue is. Okay, so what is exactly algorithm for insertion and deletion operation in linear queue? Okay, so if you want to insert the element into queue, what are the priority requirement we need to concentrate here? Okay, that we have to highlight from this. Okay, now we focus on that point. Fine. Okay, so here you can concentrate. There is one important part, that is here the queue is the place where to store the data. Okay, fine. So we have to insert the element into it. Okay, insert the element from rear side and deleting from front side. Okay, so here n is the maximum size of queue, and finally the item new we have to add it here. Okay, so initially if rear equal to n means suppose if we have storing all the if you have stored all the element into queue, let's say here our rear pointings to 7 means our queue is full. Okay, for inserting the element into queue, the basic requirement is queue should not be overflow or full. That's why we are first step of algorithm is rear equal to n, means our queue is full, rear pointings to the last location of the array. Okay, that's why we print overflow or return. That's why we have to set it as a rear equal to rear plus 1. Okay, and we have to add the element into queue. Queue is the name of the array of rear में हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम को इंसर्ट कर रहे हैं. Okay, so this is the operation for inserting the element into queue now. Okay, the next will be the deletion operation. Okay, we have to delete the element here. Okay, so fine, we have to focus on that point also. Okay, so the next point is we have to delete the element from the queue. Okay, no doubt if you want to remove the element from the queue, we have to required queue is the name of the array, front, rear, and the item. Okay, so we need to remove the elements from queue using front operator. Okay, so for removing purpose,
Okay, queue should not be empty. Means queue empty hoga, we cannot delete the element from front or queue. Okay, that's why initially if front equal to n plus 1 means the print it is underflow, means its elements is not stored into the front, because let's say पूरा queue भरा हुआ है और लास्ट का एलिमेंट हमने डिलीट किया है, तो फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा, मीन्स इट्स एरे आउट ऑफ बाउंड भी बोल सकते हैं, इट इज अंडरफ्लो मीन्स सारे एलिमेंट हमने डिलीट कर लिए, so we cannot the delete element from the queue. That's why again we have to set the which element you want to delete or which item you want to delete. So क्यू का फ्रंट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, करंट आइटम सेट करना पड़ेगा, एंड वहाँ से हम लोग एलिमेंट रिमूव करेंगे और फ्रंट को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, दैट इज फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 और वी कैन रिटर्न द वैल्यू. Okay, this type of operation we are going to perform. Okay, this is an example of queue here. Okay, so we can easily understand that the operation of queue here. Okay, so now we call it as a how to insert the element into queue. Okay, fine, so we focus on that point. Fine. Okay, uh, now just concentrate here. Consider the linear queue example here. Okay, just concentrate on first example that I'm highlighting using mouse cursor. Just concentrate, rear pointings to 4, front pointings to 1, and our total number of element size will be same. Okay, this total number of elements kitne 7 hai. So initially front pointings to one location and we are inserting the element from rear side. Okay, so here just concentrate. So we required rear plus plus, so just concentrate here, we are storing the element or insert the element into queue using rear pointer and the line added from backside, you can easily understand that. Okay, and the second just concentrate deleting the front element. Is first जो 10 वैल्यू थी we have remove it, so no doubt front अपना 50 को point करेगा, means now front pointing to second position, the value is 50. And what about when we are inserting the element into queue, rear pointings to 5 and front pointings to 2. Okay, now again we have to delete the element from it, so again for second location value we are going to remove here. Okay, again front pointings to 3 and rear pointings to 5. Likewise we can delete the element from front. Okay, from the queue data structure. Again here our next element pointings to, let's say our after deleting 30, no doubt after deleting 50 our front pointings to third location and we are inserting the element from rear, that's why the next value pointings to the here only. Okay, so likewise we are going to insert and delete element from the queue using graphical representation or using one example. Okay, so now so what exactly we have seen this type of linear queue. Okay, so what is the drawback of linear queue, can you imagine it? Okay, so just see the last, that is we have inserting 60 and rear pointing to 6 location and front pointing to 30. Can you imagine it, after deleting all the element, let's say consider 30 delete kiya, 40 delete हुआ, 20 delete and 60 also delete, we are deleting all the elements. So this wastage of memory, actually we are not utilizing this memory again, we cannot store the element again, फिर से उसमें store नहीं करेंगे. If you want to store the element again in this queue, queue पूरा empty होने के बाद फिर से मुझे element को store करना है, so it's not possible. मतलब पूरा queue empty हो जाएगा, फिर से हम उसमें store नहीं कर सकते, हमें फिर से नया queue बनाना पड़ेगा. This is a drawback of linear queue. Okay, what is the drawback of linear queue here? Just concentrate. Once the queue is full, even though few elements from the front are deleted and some occupied space is relieved, but it is not possible to add any more new element as the rear has already reached to the queue's rear most position. Okay, so this is a drawback of linear queue, that is we cannot reutilize the deleted node or we cannot reutilize the memory, that is elements are already deleted, means we cannot reutilize the memory here. Okay, so once it's deleted all the elements from queue we cannot reutilize, that's why this is a drawback of linear queue. Means वो queue empty हो जाएगा, again I want to store the another element, again I have to create new queue. Okay, so this is a drawback of linear queue. So for overcoming this drawback queue, the new concepts comes, that is
circular queue. Okay, so circular queue is very important concept. Okay, so why it is circular? The graphical representation says that how circular queue will work. Okay, this queue is not linear but circular, you can easily understand that. Okay, its structure can be like the following figure. In circular queue, once the queue is full, the first element of the queue becomes the rearmost element if and only if the front has moved forward. Otherwise, it will again be a queue overflow set. So how? Just concentrate on diagram here. Okay. So in that circular queue, having no doubt it's a circular fashion element are store. Okay. So again here, no doubt the concept is we are inserting the element through rear and deleting from front. Okay. So you can easily understand that. So here highlighting the arrow. Rear, in rear pointing to fifth location, and we are storing the element into 50. Okay, and front pointing to zeroth location, means deleting start from front here. So what is the यूज ऑफ इट? लेट्स से कॉन्सेंट्रेट करो फ्रॉम जीरोथ लोकेशन से रेयर ने वैल्यू स्टोर की है। जीरो में 23, वन में 12, देन टू में 45, थ्री में 23, फोर में 47, देन फिफ्थ में 50। लाइकवाइज वैल्यूज आर इंसर्टेड, मीन्स नेक्स्ट रेयर का आ जाएगा, रेयर प्लस प्लस करके सिक्स लोकेशन में वैल्यू जाएगी, देन रेयर प्लस प्लस करके सेवन में वैल्यू जाएगी। जस्ट कॉन्सेंट्रेट किया, जब रेयर यहाँ पे आ जाएगा तो सर्कुलर क्यू का बेनिफिट क्या रहेगा? वेन using front pointer, the value is deleted from it. Okay, front से हम ये value delete करेंगे, again using rear pointer we can easily store the new element here. Means here we are utilizing reutilization of memory and the same queue here. Okay, so this is the biggest advantage of circular queue as compared with linear queue. Okay, so circular queue overcome the drawback of linear queue. So circular fashion we are representing the queue here. Okay, means again if we are considering फ्रंट से एलिमेंट डिलीट हो रहा है, लेट से 23 डिलीट हुआ, 12 डिलीट हुआ, 45 डिलीट हुआ, अगेन दिस मेमोरी इज फ्री। सो अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर मैनर फिर से हम रेयर को प्लस प्लस करके उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट circular queue is. Okay, so this is a major concept. Okay, so this is what circular queue overcome the drawback of linear queue is. Okay, so what exactly it is executed, that we need to concentrate. Okay, again in circular queue there are two operation: insertion operation and delete operation. Okay, so again algorithm in insertion operation, how it is, how it will be done in using circular queue. Again same concept, the function is insert circular queue, in which the queue variable or array, type of array is used, then rear, front, total number of element, and the item you want to delete. Okay, in circular queue the where to store the data, rear represent the location in which the data element is to be inserted, and front represent the location from which the data element is to be removed. Okay, so here n is the number maximum size of circular queue, and finally item is the new item to be added. So initially rear equal to -1 and front equal to -1. Okay, so no doubt when we are going to insert the element in any kind of queue, whether it is linear or circular, the front and rear must be pointing to -1. Okay, so initially what will happen, this is the algorithm we are taking step by step. Okay, so initially front equal to -1 and rear also -1, no doubt then we have to put front equal to 0 and rear plus plus, means we have to do the next step, that is very important. So initially front -1 rear -1, we have to set front equal to 0, 0 को point करना पड़ेगा, then go to step 4. So what step 4 says? Set rear equal to rear plus 1. Yes, we have to increase rear by 1, means rear pointings to now 0. You can easily understand in this diagram in circular fashion, in circular queue, that is zeroth location. Okay, fine. So front is here, and rear, front is set to 0 and rear also set to 0, because we have to increment rear equal to rear plus 1. Okay, now second step, if front equal to 0 and rear equal to n minus 1, what exactly it is? Just concentrate, front pointing to 0 location,
Okay, where front points zero location and rear equal to n minus वन मीन्स सपोज ये रेयर है वो पॉइंट कर रहा है n माइनस वन दैट इज लास्ट लोकेशन ऑफ एलिमेंट दैट इज सेवन. ओके, तो रेयर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है मतलब हमने सिक्स लोकेशन पे भी वैल्यू डाली, मान लो 24, सेवन में भी डाली है 26, तो यहाँ पे क्यू फुल हो जाएगा. ओके, दैट्स वाई इफ रेयर इक्वल टू n माइनस वन, ओके, एंड फ्रंट इक्वल टू जीरो मतलब एक भी एलिमेंट हमने डिलीट नहीं किया है और रेयर क्यू के लास्ट लोकेशन में जाके पहुंच गया है. ओके, सो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू और फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन मीन्स व्हाट. इनिशियली वी हैव टू टॉक अबाउट दिस टू कंडीशन. फ्रंट जीरो पे है और रेयर इक्वल टू n माइनस वन पे, मतलब रेयर मेरा पॉइंट कर रहा है लास्ट लोकेशन में जहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट हमने स्टोर किया है. इसका मतलब है सर्कुलर क्यू क्या है, ओवरफ्लो है. ओवरफ्लो है मीन्स वी कैन नॉट इंसर्ट द एलिमेंट इन दैट. ओके, दिस इज द कंडीशन. जब भी इंसर्ट करना है क्यू में एलिमेंट तो हमें चेक करना पड़ता है वेदर क्यू शुड नॉट बी ओवरफ्लो और फुल. ओके, fine. So what we have to do here? So here one important part is that if rear equal to n minus वन then set rear to zero. yes, so rear n minus वन पे है मतलब लास्ट लोकेशन में भी हमने वैल्यू डाल के रखी है तो हमें रेयर को जीरो पे लाना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे जीरो पे ला के हमें क्या करना है, सर्कुलर में हम फिर से एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं. क्यू फुल था और मान लो फ्रंट से हमने एलिमेंट को रिमूव किया है तो हमारा स्टेप 5 पे जाएगा. स्टेप 5 में है सर्कुलर क्यू के रेयर में आइटम को डालो. मैं सर्कुलर क्यू के रेयर में हमने क्या डाला, आइटम को इंसर्ट किया. आई होप एवरीवन एग्री दिस स्टेप. अगेन आई एम रिवाइजिंग हियर, that is initially front, again we are revising whole the step. front minus वन पे था, rear minus वन पे है initially, so we have to set front equal to zero now. So you can easily understand using this diagram that is zeroth location पे फ्रंट को हमने सेट किया. एंड गो टू स्टेप फोर. स्टेप फोर मीन्स रेयर को क्या करो, प्लस वन करो, मतलब रेयर में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, इफ फ्रंट जीरो पे है मीन्स वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द रेयर, फ्रॉम द फ्रंट. क्यू का एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया है और रेयर का पॉइंट कर रहा है एन माइनस वन. रेयर एन माइनस वन मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एट. तो लास्ट एन माइनस वन दैट इज सेवंथ लोकेशन. देन व्हाट वी हैव टू डू, रेयर लास्ट लोकेशन पे है और एक भी एलिमेंट हमने क्यू से डिलीट नहीं किया है मतलब हमारा सर्कुलर क्यू क्या है, ओवरफ्लो है. ओके, सो वी कैन नॉट स्टोर हियर. सो और सेकेंड पॉइंट, फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन मीन्स हमारा जो फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, सपोज रेयर सेवंथ लोकेशन पे है तो नो डाउट सर्कुलर क्यू में फ्रंट कहाँ पे है, रेयर प्लस वन. मतलब है सेवन प्लस वन किया तो वो जीरो लोकेशन पे फ्रंट है, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो का. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है. मतलब रेयर एन माइनस वन पे है मतलब रेयर सेवन पे है, इसका मतलब है क्यू फुल है. और फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है फ्रंट रेयर के एक स्टेप आगे है. इसका इंडिकेशन हो गया कि हमारा क्यू क्या है, फुल है. So we can easily understand that print circular queue overflow. Okay, this condition is clear. Now, if next condition we have to check, if rear equal to n minus वन है so no doubt मतलब क्यू हमारा फुल हो चुका है तो उसको सेट करना है जीरोथ लोकेशन पे. मतलब यहाँ पे हम फिर से एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं. सो गो टू स्टेप 5. स्टेप 5 पे हमने क्या किया है, सेट और इंसर्ट. सर्कुलर क्यू के रेयर में क्या डाल दो, आइटम को डाल दो. मतलब सर्कुलर क्यू के रेयर में क्या चला जाएगा, हमारा आइटम चला जाएगा. आई होप एवरीवन एग्री दिस. नाउ अगेन वी हैव टू सेट रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन. तो हमें फिर से रेयर को प्लस वन करना है क्योंकि again we have to set rear equal to rear plus 1 and again we have to insert the element into queue. So this is the operation that we have done, inserting the element into circular queue. So what is the benefit of circular queue? So we can utilize or reutilize the डिलीटेड मेमोरी, फिर से उसको रीयूटिलाइज करके हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. ओके, so now this is the algorithm for insertion operation. Now we focused on delete operation. Okay, so delete circular queue. Okay, delete operation we have to do here. So there are again major part is what in circular queue, front rear pointer is required and item which you want to delete. Okay, so here circular queue is a place where data are stored. Rear represent the location in which the data element is to be inserted and front represent the location from which data is to be removed. Okay, so from front is assigned to initially
atom, that is 0. Okay, no doubt we are storing the element into 0th location. Okay, so now we have to concentrate on algorithm of delete operation on circular queue. Initially just check, okay, if front equal to -1, then what happened for deleting any kind of element from circular queue? First we have to check circular queue should not be underflow, means it should be the element is present. queue empty hoga to we cannot the delete. That's why we have to check if front equal to -1 means what, circular queue underflow, because we are deleting the element from front pointer. Okay, now so if it is not, step 2, set item equal to circular queue of front, means front जहाँ point कर रहा है, let's say according to this diagram we can easily understand. So front pointing to 0th location, value is 23. ओके, सो जो एलिमेंट को डिलीट करना है उसको करंट आइटम सेट करो, मतलब क्यू का फ्रंट जहाँ पॉइंट कर रहा है, जैसे क्यू का फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, 0th लोकेशन पे, 0th लोकेशन पे, तो क्यू का फ्रंट जहाँ पॉइंट कर रहा है उसको आइटम बना दो जो हमें डिलीट करना है. ओके, फाइन. इनिशियली अगेन इफ फ्रंट इक्वल टू n-1, इसका मतलब है सारे एलिमेंट डिलीट करते 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 हम लास्ट लोकेशन तक आ जाएंगे, लेट्स से 7. सपोज फ्रंट हमारा सारे एलिमेंट क्यू को डिलीट करते करते 7 तक आ गया है. सो अगेन वी हैव टू सेट इट एज 0, मतलब फिर से वो कहा जाएगा 0 को जाएगा, मतलब फिर से जो नए वाले वैल्यूज सर्कुलर क्यू में स्टोर किए जाएंगे, इंसर्ट किए जाएंगे फ्रॉम रेयर, उसको वो डिलीट कर सकता है इन सर्कुलर मैनर. ओके, and the fourth step is if front equal to rear, मीन्स वॉट, पूरा डिलीट करते करते एक कंडीशन आएगी फ्रंट और रेयर एक साथ आ जाएंगे. इसका मतलब क्या है, रेयर ने फिर से सारे एलिमेंट भर दिए, फ्रंट ने सारे डिलीट किए, डिलीट करने के बाद फ्रंट एंड रेयर एक पोजीशन पे आ जाएगा, वहाँ पे कुछ एलिमेंट रहेगा ही नहीं. इसका मतलब है अपना फ्रंट और रेयर फिर से हमें क्या सेट करना पड़ेगा, -1 -1. वाई, बिकॉज now after deleting all the element from the queue data structure, circular queue data structure ऐसे, now our queue is empty, फिर से हम उसको reutilize कर सकते हैं. तो using, that's why our front and red should be -1. I hope everyone agree. Now if we want to delete the element of the queue, so no doubt we are deleting the element from front. That's why we have to set front equal to front plus 1 here, and we have to return that value. Okay, so this is the operation that in circular queue using circular queue of delete operation. I hope everyone clear this concept. Okay, so this is a removes or recover the drawback of circular queue. It's reutilize the memory in circular fashion. Okay, again I am revising the delete operation here. इनिशियली फ्रंट -1 पे है, इसका मतलब है क्यू में एलिमेंट नहीं है, so circular queue underflow रहेगा, means we cannot the delete the element from queue. We have to check this condition. Okay, if द एलिमेंट इज स्टोर इन टू द क्यू, तो डिलीट कहाँ से करना पड़ेगा, फ्रंट से. जो फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है उसको एलिमेंट को हमें सेट करना पड़ेगा जो करंट एलिमेंट डिलीट करना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, स्टेप 2, using step 2 we can delete the element from front, okay, from queue also. And then if condition front equal to n-1 means delete पूरा क्यू डिलीट करते करते लास्ट लोकेशन तक गए, फ्रंट वहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो उसको सेट करना है 0, मतलब फ्रंट जाएगा 0 को. ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन, मतलब फिर से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं. स्टेप 4, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, इसका मतलब है सारे एलिमेंट डिलीट करते करते हम लास्ट लोकेशन तक गए, देन सेट फ्रंट, सारे एलिमेंट डिलीट करते करते फ्रंट एंड रेयर एक पोजीशन पे आएगा, मतलब फिर से रीयूटिलाइजेशन करना है फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ दैट सेम क्यू. now at that time we have to set front equal to -1 and rear also -1, means पूरा क्यू हमारा empty हो जाएगा. okay, again using rear we can insert the element. front को क्या सेट करना है, front equal to front +1. okay, so thank you so much students. I hope everyone clear the concept of circular queue here. Okay, thank you so much dear student. I hope everyone clear that concept. Thank you, bye bye.